हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग्स को लेकर। तो ये टोटली नया चैप्टर है टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग से। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इन ए नॉलेज driven society where information has increasingly short shelf life, it is important for the teachers to focus on long-term goals of preparing our students for life activities, thereby equipping them with more than finite and rapidly adolescent body of knowledge, and developing them to understand, apply, and create knowledge, as well as to constantly refresh and upgrade their knowledge. An objective describes an intent, results of instruction rather than the process of instruction itself. Thus, instructional objective communicate intended learning and outcome at the end of the instruction, and the state the changes that instruction should make in the student behavior. A good objective should be specific, outcome based, should emphasize on the output rather than process of instruction, and measurable. The first and foremost point to become considered in teaching learning process is what student will be able to do and end of an instruction. The objective of teaching and learning must be integrated at the end of the instruction. Classification of teaching and instructional objectives. There are two main ways of classifying instructional objectives. One classification is given by Bloom, where another classification is given by Gunge and Briggs. ब्लूम क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एडजेक्टिव्स। अभी हम देखेंगे कि ब्लूम ने क्या क्लासिफिकेशन कहा है टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो ये शुरू करते हैं ब्लूम्स के क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फॉल अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। कॉग्निटिव डोमेन, पहला कैटेगरी है कॉग्निटिव डोमेन। इट इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, thinking of knowledge, and core learning domain. The other domain, affective and physicomotor, require at least among cognitive components. It functions at 6 levels, which are as follow. Number 1 function, knowledge. It is basically about recalling information or contents. Number 2, comprehension. It is the ability to grasp the meaning of material. Number 3, application. It converts the abstract knowledge into the practice. Number 4 is analysis. It involves breaking down communication into its constituent part in such manner that relationship of ideas is understood better. Point number 5, synthesis. It is basically about combining the constituent part to make it whole. It is a etonym of analysis. Point number 6, evaluation. It involves the judgment made about the value, methods, and materials for particular purpose. अभी हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 2, एफर्मेटिव डोमेन के बारे में, जो ब्लूम ने कहा है। एफर्मेटिव डोमेन क्या है? इट डील्स विद द एटीट्यूड, मोटिवेशन, विलिंगनेस, पार्टिसिपेट, वैल्यूइंग व्हाट इज बीइंग लर्न, एंड अल्टीमेटली इनकॉर्पोरेटिंग द वैल्यूज ऑफ डिसिप्लिन इनटू अ वे ऑफ लाइफ. It asks for better student participation. It includes the following level. पहला लेवल है रिसीविंग, विलिंगनेस टू लिसन. दूसरा लेवल है रिस्पॉन्डिंग, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट. तीसरा लेवल है वैल्यूइंग, विलिंगनेस टू बी इन्वॉल्व. चौथा लेवल है ऑर्गेनाइजिंग, विलिंगनेस टू बी एन एडवोकेट ऑफ एन आइडिया. पांचवा लेवल है कैरेक्टराइजेशन. तो ये आएगा विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ. अभी देखेंगे फिजिकोमोटर डोमेन. फिजिकोमोटर डोमेन, तो फिजिकोमोटर डोमेन क्या है? इट इज़ मेनली कंसर्न विद द एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स. फॉलोइंग आर 5 डिफरेंट लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन फिजिकोमोटर डोमेन. तो 5 इंस्ट्रक्शन है. तो पहला इंस्ट्रक्शन है इमिटेशन. इट इंक्लूड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए स्किल by skilled person and learner try to follow the same. दूसरा है manipulation. A learner try to experiment with various aspects of life like manipulating
machinery and equipment, etc. तीसरा है precision, accuracy in performing various act increases with practice. चौथा है articulation, achieving a desired level of efficiency and effectiveness through the practice. पांचवा है naturalization, skills in internalize and individual is able to adapt, modify or design new technique, methods or procedures according to the requirement of situation. Thank you friends. In the next video I will teach you method of teaching. Thank you.